Hello everyone. So we have completed till 16.7, which was implicit function का differentiation. Now we'll do this topic 16.8. This is linear approximation and differentials. Okay, before we start this, 16.10, this is not a part of your course. So the implicit function theorem is optional and it won't be tested in the exam. Okay. Now suppose we have already studied the equation. We studied this in first semester as well, and इस कोर्स में भी हम ये पढ़ चुके हैं. Plane to z fxy at the point AB and f of AB of its graph is z equals to, okay, this is actually z minus f of AB equals to f1 dash AB x minus a plus f2 dash AB y minus b. So this can be written as z equals to f of AB plus f1 dash AB x minus a plus f2 dash AB y minus b. Okay. Now we have studied about the linear approximation. So the linear approximation to the function, ठीक है, वो अभी हम जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, मे बी इन द क्लास और ऑफलाइन क्लास में कभी बताया था कि कोई भी फंक्शन ऐसे कैसी भी फॉर्म हो तो हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन बताते हैं कि वो किस हिसाब पे होगा. कि जैसे अगर एक 2x2 कर्व है ऐसे करके कुछ, तो हम बताते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम उसको लीनियरली बनाना चाहें तो वो ऐसा कुछ दिखेगा कर्व, तो उसे हम लीनियर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं किसी भी फंक्शन की. ठीक है, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, पॉलिनोमियल हो. 2fxy अबाउट ए बी, मतलब ए बी पॉइंट पे दिस इज गिवन बाय f of xy, this is plus f1 dash ab x minus a plus f2 dash ab y minus b. ठीक है, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर भी आने के चांस थे, तो इस सेमेस्टर भी रहेगा चांस. तो एग्जांपल 16.28, फाइंड द लीनियर अप्रॉक्सीमेशन टू the function fxy, which is given as e x plus y xy minus 1 about 0 0. So we know using this formula what we have is, okay, we need to find f of 0 0 first. F of 0 0, so e to the power 0 1 0 minus 1 minus 1. So f of 0 0 we'll see is coming out to be minus 1. Now f1 dash xy would be, okay, we are differentiating with respect to x, so e x plus y xy minus 1. Then we'll use the product rule, first function then second, e x plus y times y, and
f1 dash at 0 0. So this is e to the power 0, 0 minus 1 plus e to the power 0 into 0. So this is 0, this is minus 1, this is plus 1, and plus 1 times minus 1 is minus 1. Okay, then f2 dash xy. So this would be same product rule that we'll use, times x. Similarly, f2 dash 0 0, e to the power 0, 0 minus 1 plus e to the power 0 into 0. This becomes 0, this whole things become minus 1. So f of xy, which is in this case e to the power xy times x plus y. So this is e to the power x plus y times xy minus 1. This is approximately equals to f of 0 0 minus 1 plus f dash 1. So minus 1 times x minus a 0 plus minus 1 times y minus b, which is 0, y minus 0. So this is approximately equals to minus 1 minus x minus y. So the complicated function is approximated by this thing at 0 0. तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था उसको हम लीनियरली इस फॉर्म में लिख सकते हैं एट 0 0. ओके, नाउ मूविंग टू द फर्दर टॉपिक, द differential of a function of two variables. Now अगर सपोज लेट z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ये फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, एंड लेट इट बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. तो इफ वी हैव dx and dy are arbitrary small numbers, then we can define the differential of z equals to fxy at xy, which will denote as del z or del f, because z is equals to f of xy. So this implies del z equals to f1 dash xy into dx plus f2 dash xy into derivative of y. So we are differentiating first with respect to x, then with respect to y. So this is what we are getting. तो बेसिकली जब x को हमने चेंज किया x प्लस डी एक्स, हमने y को चेंज किया y प्लस डी वाई, तो जो फाइनल ऑब्जेक्टिव वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, जो जितने इंक्रीमेंट से चेंज आ रहा है, दैट इज चेंज इन z कितने से होगा, f ऑफ x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. तो हमारा ऑब्जेक्टिव वैल्यू इतने से चेंज आ रहा है. एंड वन मोर थिंग, इफ डी एक्स एंड डी वाई जो चेंज आया एक्स में और वाई में आर स्मॉल इन एब्सोल्यूट वैल्यू, so then what we have is change in z can be approximated by dz. इसका मैं अभी थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ, क्या चेंज इन z एंड dz का क्या होगा. अगर ये स्मॉल है तो देन इट्स फाइन, बट अगर स्मॉल नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बट ठीक है. उससे पहले विल कम टू दिस कंक्लूजन, चेंज इन z विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू dz, और dz किसके बराबर था हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, डैश एक्स वाई डी वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा पहले, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करा. ठीक है, अब देखो
एक ये डायग्राम, आई ट्राई टू मेक डायग्राम, माई डायग्राम्स आर नॉट सो गुड. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज जेड. ठीक है, दिस is a tangent plane, and this thing, the one in green, is the surface. ये सरफेस है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई. ठीक है, I'll draw this in blue. ठीक है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है. ये जो अब मैं रेड में बना रहा हूँ, दिस रेड इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस गिवन बाय दिस इज सरफेस. जो ब्लैक में है दैट इज द टेंजेंट प्लेन. ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट सपोज एक्स वाई, दिस इज पॉइंट क्यू विच इज x plus dx and y plus dy. राइट, नाउ अगर हम ये सरफेस के अकॉर्डिंग करें, ठीक है, इसको थोड़ा मैं और सरफेस को अच्छे से बनाता हूँ ऐसे करके. ओके, नाउ इफ यू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस, सो व्हाट विल सी इज ये जो यहाँ इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ समवॉट, तो दिस इज चेंज इन z and this thing in dz. so what does that mean is कि अगर जो हमारा एरर आ रहा है, क्योंकि वी आर रिप्लेसिंग चेंज इन z बाय डेल z, और ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम टेंजेंट प्लेन को फॉलो कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द कर्व. अगर कर्व को फॉलो करेगी तो हमारा, ठीक है, तो द थिंग इज if you're following the curve, so what we have is change in z, but if you're following the plane, the tangent plane, so what we have is del z. तो इसलिए वो थोड़ा बहुत एरर का स्कोप रहेगा इसमें, राइट. सो जस्ट go through this diagram again, and I'll give you one more minute to just go through this diagram again. Okay, now moving forward, what we have is, so we have already found this. Now, okay, this is Q, S, and this was R. This point somewhere here is P. Okay, now what we have is, let z minus fxy equals to f1 dash xy times x minus x plus f2 dash xy y minus y. राइट, सो ये एक हमारी इक्वेशन हो गई फॉर द सेट ऑफ पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स हो गए एक्स वाई जेड इन द टेंजेंट प्लेन, क्योंकि ये इक्वेशन तो टेंजेंट की है, एट द पॉइंट एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई. ठीक है, सो फार दिस क्लियर.
Now let capital X equals to small x plus dx and capital Y equals to small y plus dy. अब इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो व्हाट वी हैव इज z इक्वल्स टू f of एक्स वाई प्लस एफ वन डैश एक्स वाई and x minus xs would be dx. Similarly, this would be dy. So this is nothing but this whole thing. This is nothing but del z. So what we have is z equals to f of xy plus del z. Okay, now we'll do some example. Example 16.9 which states that कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है y which is a function of capital and labor. Now if we change labor and capital by 1 unit तो हम चेक करना चाहते हैं आउटपुट पे कितना चेंज आएगा. तो हमें पता है दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. तो चेंज इन y कितना होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टाइम्स कितना कैपिटल में चेंज आया प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टाइम्स कितना लेबर में चेंज आया. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो बेसिकली टोटल आउटपुट में कितना चेंज आया, इट इज़ जब कैपिटल को डी के से चेंज किया एंड लेबर को डेल एल से चेंज किया माइनस जो ओरिजिनल कैपिटल एंड लेबर था. ठीक है, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ के डैश डी के प्लस एफ एल डैश, दिस इज एम पी एल टाइम्स जितना लेबर चेंज हुआ. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो विल कम टू दिस कंक्लूजन. एक ये फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई. दिस इज समवॉट इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू this is approximately equals to f of xy plus f1 dash xy dx plus f2 dash xy dy. So far we have got this. Okay, so now I'll give you an example through which you are supposed to solve for this. So this is example 16.30. It is given that f of xy is xy cube minus 2x cube, and it is given that f of 2 3 equals to 38. You're supposed to use this. This is 16.37 to find the value of f 2.01 and 2.98. So you need to think what dx would be and what dy would be. So I'm giving you a minute to solve this using 16.37. Okay, so f of 2.01 comma 2.98, this would be approximately equals to f of 2 comma 3 plus
f1 dash 23 times dx. We know for 2, so 2.01, so dx is 0.01 plus f2 dash 23 and dy is 3 minus 2.98 dx is 2.01 minus 2, which is 0.01. dy is 2.98 new minus old, which is minus 0.02. So minus 0.02, right? So this is 38 plus. Now f dash 1 at xy is y cube minus 6x square. So f1 dash at 2, 3. This is equals to 2, so 4 into 6, 24, x cube 27 minus 24. So this is coming out to be 3. Similarly, f2 dash xy, this would be 3xy square. That's it. So f2 dash 2, 3. 3 into 2 into 9, 27, 54. So it is 38 plus 3 into 0.01 plus 54 into minus 0.02. So approximately equals to, so if we'll solve this and use the calculator, so this is coming out to be 36.95. Okay, but now if we put the direct value of this here, we can see what we'll get is 2.01 into 2.98 to the power 3 minus 2 into 2.01 to the power 3. So we are getting this, but in case if you put the direct value, so f of 2.01 and 2.98, we are getting the value of 36.95061792. ठीक है, up to 4 decimals तक करेंगे 36.9506. Okay, so the actual change is this, but we are getting a value of this, and कितना gap है 0.0006, and this accounts for the error in estimation. ठीक है, I hope this is clear. Now moving forward, rules for differentials. Now जो हमने rule 2 वेरिएबल में लगाए हैं, that would be applied for the nth variable as well. सारे several variables पे भी हो जाएगा. So first is the derivative of af plus bg, where a and b are constant, so it would be a times derivative of f plus b times derivative of g, क्योंकि ठीक है इसमें भी plus f time derivative of a, तो this would become 0 plus g times derivative of b, this would also become 0. ठीक है, तो we are left with this thing only. Now second is dfg. Using the product rule, so we have g into df plus f into dg. Then the third rule, the quotient rule, f upon g, so g into df minus f into dg by g square. So if g square है तो डिनोमिनेटर में, so g should not be equals to 0.
Okay, these are the basic rules for differentiation only. And one for the composite function. If we have z equals to g f of xy, then this implies dz would be g dash f of xy into df. Okay. Okay, so let's do an example. This is example 16.31. So you're supposed to find an expression for dz in terms of dx and dy. Z equals to a x to the power a, b y to the power b. Z equals to e x u, where u equals to, u itself is a function of x and y, and c is z equals to log x square plus y. Okay, so I'll solve the first one. Okay, derivative of this del z equals to derivative of this a x a minus 1 into derivative of x, which is del x, plus b y b minus 1 into derivative of y, which is del y. So this was basic only. Now moving to the b part. Now what we have is del z equals to e xu into derivative of xu, which is nothing but exu. Derivative of xu is x time derivative of u plus u time derivative of x, and this can be further written as e xu times x times, so du. Now u is a function of x and y, so du would be u1 dash xy with respect to dx plus u2 dash xy with respect to dy, and we are left with plus u dx. I hope this is clear. Now e xu xu1 dash xy plus u whole times dx plus u2 dash xy times dy. So this is the final result that we'll get. Similarly, in case C, z equals to O, so dz equals to 1 upon x square plus y into the derivative of this. This is 2x dx plus 1 into dy. Okay, I hope this is clear. Now moving forward, this is a very important property, invariance of the differential. I'll discuss what does this mean. Invariance of the differential, ठीक है. तो बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ पहले है क्या चीज़. इसका मतलब है कि अगर जो फंक्शन है वो कॉम्पोजिट फंक्शन है एंड इट इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल्स एज वेल. जैसे एक z फंक्शन है, पहले तो f x एंड y का, बट सपोज x is itself dependent on tns and y is also dependent on tns. तो invariance of the differential, I'll mark this as important. इसका मतलब है कि z अगर फंक्शन है एफ एक्स वाई का एंड विच x and y आर फर्दर फंक्शन ऑफ tns, तो z इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ tns. ठीक है. इनवेरियंस ऑफ द डिफरेंशियल मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कि z tns का कॉम्पोजिट फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल एज इट इज सेम रहेगा. ठीक है. तो आई विल शो यू हाउ. फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड
ठीक है, फर्स्ट वी आर एज्यूमिंग एफ, स्मॉल एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन. सेकेंड थिंग, हमें पता है कि z इज अ composite function of t and s, right? now अगर t चेंज हुआ dt से and s चेंज हुआ ds से, then the differential of z would be z dash t dt plus z dash s ds. now हम चेन रूल लगा के z dash t निकाल सकते हैं. सो एंड चेन रूल के साथ z dash s भी निकाल सकते हैं. सो डेल z वुड बी z dash t. सो z dash t इज f1 dash xy into xt dash plus f2 dash xy into yt dash whole times dt. So using chain rule, this is zt. Similarly, using chain rule, f1 dash xy xs dash plus f2 dash xy ys dash into ds. This is okay. Now this is what we have got. So what we'll do is f1 dash xy को कॉमन ले लेते हैं. what we are left with xt dash dt plus xs dash ds plus f2 dash xy को कॉमन लिया अगर, we are left with xt, sorry this is yt dash, so we are left with yt dash dt plus ys dash ds, and this particular thing is nothing but dx. This particular thing is nothing but dy. So what we are getting is f1 dash xy dx plus f2 dash xy dy. So del z equals to this. इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि जो हमारा डिफरेंशियल फंक्शन था z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, अगर वो सिर्फ x एंड y में था, तो अगर x एंड y dx एंड dy से चेंज होते हैं तो वी गेट दिस रिस्पेक्टिवली. बट इररिस्पेक्टिव x एंड y फ्री वेरिएबल है या नहीं, फ्री वेरिएबल मतलब वो t पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इस केस में दे आर डिपेंडेंट ऑन t एंड s. अगर वो फ्री वेरिएबल है या फिर दे डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल्स लाइक टी एन एस, दोनों केसों में हमारा डेल जेड सेम रहेगा. ठीक है. तो व्हाट दिस मीन्स इज दिस इज द प्रॉपर्टी इनवेरियंस ऑफ द, I'll just okay, this is the property of invariance of the differential. Okay, I hope this is clear. Now the next topic, the differential of a function of n variables. Now what we have is df. अब n variables है तो it is f1 dash dx1 plus f2 dash dx2 till fn dash dxn. ठीक है. सिमिलरली अगर ये सारी वैल्यूज बहुत छोटी है, विच मीन्स dx1 dx2 dxn are very small, then we can again use that this is approximately equals to del z.
जबकि दिस इज़ द एक्चुअल इंक्रीमेंट, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं डेल जेड से, इसलिए वो थोड़ा सा एरर आता है, ठीक है। अब नाउ द सेम थिंग अगर n वेरिएबल्स में भी है तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द इनवेरियंस ऑफ द डिफरेंशियल वुड स्टिल होल्ड. So whether the variables are free or not, the differential would remain the same. Okay, let's do one last example. 16.32. So what we have is z equals to a x1 to the power a x2 to the power, okay, a x1 to the power a1 x2 to the power a2 till xn to the power an, where all xi's are greater than 0 and capital A, A1, A2 all are constant till an, and a is greater than 0. Now they are asking us to find del z. Firstly, this is a quadratic type of a function. We are supposed to take log. You should know by now you should know this, that we are supposed to take log in this case. तो natural log ले लिया both side, a1 log x1 plus a2 log x2 plus an log xn. So अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, दिस बिकम्स 1 by z dz equals to 1 by a dA. So this would become 0. This term would become 0 because a is a fixed number. This would become 1 by x1 into a1 times 1 by x1 into 1 plus x2 into a2 into 1 plus so del z becomes z times a1 by x1 plus a2 by x2 plus an by xn. So we are done with this topic, and only 16.9 system of equations is left. 16.10 is not a part of your course. So we'll just do this in the next video and we'll be done with chapter 16. Okay, thank you.